let's start the new chapter, I mean new video. And till now we have seen the unit of solid angle, that is stereo. So next is there are certain rules that we need to understood. Like the very first one is, if you are going to write down the name of a unit, it should be started with the small letter, not with the capital word. अगर आप किसी यूनिट का नाम लिख रहे हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू ना हो करके स्मॉल लेटर से शुरू होगा. लाइक वी हैव हियर न्यूटन. जैसे अगर यहाँ की बात करूँ तो इट शुड बी स्मॉल एन, न्यूटन. फॉर एम्पियर कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए. फॉर कूलम स्मॉल सी. इट शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर्स, नॉट विद द कैपिटल वन. बात का आपने ध्यान रखना है. लेट्स मूव टू द सेकंड वन. अगर यूनिट एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल सेंस लाइक जो सिंपल मेजरिंग यूनिट है, जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम या ग्राम, टेम्परेचर के लिए केल्विन या सेल्सियस. अगर केल्विन और सेल्सियस की बात हम निकाल भी दे टाइम के लिए सेकंड, तो वो एक नॉर्मल यूनिट है. लेकिन अगर आप कुछ यूनिट को ध्यान से देखोगे, जैसे न्यूटन है, और अगर मैं न्यूटन की बात करूं, like Newton is the unit of force, Kelvin is the unit of temperature. So if you find some abnormal unit, it means it is for electrical. If you find up some abnormal unit, अगर आप कोई abnormal unit देख पा रहे हो, तो वो बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि उस चीज की डिस्कवरी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने की है, या उस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा लॉ दिया है जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में जानने में कामयाब है. So in the honor of that particular scientist, the name of the unit of that particular quantity is given under the name of that particular scientist. Next, rule number 3. सिंपल सा रूल है. रूल नंबर 3 क्या? सारे के सारे जो सिंबल्स हैं यूनिट्स के, that are written in small letters. Like for small m, for kilogram it's small kg, for candela it is small c, small d, and for second it is small s. And these are being like fixed by the International System of Applied Units, which we call as SI system. SI system, which has been first discovered in France back in 18th century in order to remove the confusion. जो यूनिट्स में कंफ्यूजन थी, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था उसमें, तो वहां पर. नेक्स्ट थिंग इज रूल नंबर 4. One space is left between the last digit of the numeral and the symbol of the unit. जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे लेक्चर में भी बताया था, फिर से आपको बता देता हूं. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स से Q, इट इज इक्वल्स टू NU. यहाँ पर N इज न्यूमेरिकल वैल्यू, N is numerical value and U is unit. N जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, U जो है वो यूनिट है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू और U के बीच में there has to be a gap. एक गैप होना चाहिए, छोटा सा गैप होना चाहिए, this one, छोटा सा गैप होना चाहिए between numerical value and this. चलो जी, let's move to the next one. Let's move to the next slide. The units do not have plural form. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं. यूनिट्स की कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होती. इट्स ऑलवेज मीटर, मीटर्स. वो मैटर नहीं करता है कि वो 1 मीटर है या 10 मीटर है. इट शुड बी ऑलवेज मीटर. नहीं होगा किलोग्राम, नॉट किलोग्राम्स. सेकंड, नॉट सेकंड्स. केल्विन, नॉट केल्विन्स. नेक्स्ट, एंड यस, यू कैन नॉट यूज फुल स्टॉप आफ्टर राइटिंग द यूनिट. यूनिट को लिखने के बाद आप फुल स्टॉप नहीं यूज कर सकते. इट्स नॉट लाइक दैट इट इज द एंडिंग ऑफ अ स्टेटमेंट. कोई स्टेटमेंट एंड नहीं हुआ है. इट वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी डेफिनेट इन इट्स. खुद में बहुत डेफिनेट है, बहुत डिस्क्रीट है. ऐसे कुछ फालतू की बातें नहीं होंगी. यूनिट का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का मतलब, इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन लेट्स से मास 6 kg, तो ये पता है कि बस इसमें आपको दो डिजिट्स या 2 वेरिएबल्स की ही जरूरत है. अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाता हूँ तो नॉट मेक एनी सेंस. तो वी कैन नॉट यूज लाइक फुल स्टॉप. हम फुल स्टॉप नहीं यूज करते इन टर्म्स ऑफ यूनिट. नेक्स्ट इज नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल फॉर यूनिट्स. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. यस, लेट मी टेल यू. अभी हमने एक पॉइंट नंबर 5 जो है उसमें आई हैव टोल्ड यू
In point number 5 I have told you कि there is a space between numerical value 7 Newton, so there is space. But if it's like derived unit like 7 meter per second, or I can write like this 14 joule सेकेंड, तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होगा, दो यूनिट्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। इस चीज का आप खास ध्यान रखें। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप फोर्स यूनिट लिखोगे न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की लिखोगे मीटर, तो इस तरीके से। तो यूनिट्स के बीच में यू कैन नॉट लाइक यूज द स्पेस, आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। Next thing, there are some SI prefixes. These are very important. Like 10 raised to the power 24 को हम बोलते हैं योटा, 10 raised to the power 21 zeta, exa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Let me tell you the important one. There is no need to remember these. मैं आपको important बता देता हूँ जो important है, like this. These यहाँ से ये important है. These two are. These are important one. 6 10 raised to the power 6 mega, symbol is m, kilo k and hectogram, like 1 kilogram, so that is 10 raised to the power 3 gram. If I used to see the smaller one, so smaller one are more important. These are the important one. This, if somebody asks you like 1 picometer, so that is 10 raised to the power minus 12 meter, or 1 nanometer 10 raised to the power minus 9 meter. And sometimes क्या होगा कि वो आपसे ना इनका इंटर कन्वर्जन ही पूछ लेंगे, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम is how many nanometer, तो वो हो जाएगा 10 raised to the power minus, वो हो जाएगा 10 raised to the power minus 1। इनका इंटर कन्वर्जन भी, उसके लिए आपको ये सब पता होना जरूरी है। आप ये फेमटो, एटो, ज़ेप्टो, योक्टो ये मत याद रखिए, लेकिन ये जो बॉक्स में है ये आपको याद रखने चाहिए, बिकॉज हम इनको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, चलिए लाइक सी 3 मिली एम्पियर, कुछ यूजेस में 3 मिली एम्पियर, that is 3 into 10 to the power minus 3 ampere, 5 microvolt, 5 into 10 raised to the power minus 6 volt, 8 nanosecond, 8 into 10 to the power minus 9 second, 6 picometer, 6 into 10 to the power minus 12 meter, 5 kilometer, 5 into 10 to the power 3 meter, 7 megawatt, 7 into 10 to the power 6 watt। इस तरह से कन्वर्जन होता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं, जैसे देखिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है दैट 1 nanometer is 10 raised to the power minus 9 मीटर। हमारे पास 1 नैनोमीटर की ये वैल्यू है, और 1 एंगस्ट्रॉम is 10 raised to the power minus 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम की ये वैल्यू है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हमसे पूछा गया है 1 नैनोमीटर, सॉरी हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर। मैं उसको लिख सकता हूँ 10 raised to the power minus 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करने के बाद इसको मैं लिख सकता हूँ -10 मीटर। 10 ये जो डिवाइड वाला 10 था ये ऊपर जाकर ऐड हो गया, सो दैट वुड बी 10 raised to the power minus 10 मीटर, and this can be written as 10 angstrom. So this is how you will get a relation in between the units itself. जरूरी नहीं है that for each and every time you have to take the reference of मीटर, हर बार आपको मीटर का रेफरेंस लेना जरूरी नहीं, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1 माइक्रोमीटर is equals to how many मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितने मिलीमीटर है? तो सबसे पहले माइक्रोमीटर छोटी क्वांटिटी है, यहाँ देख सकते हैं, मिलीमीटर बड़ी क्वांटिटी है, तो 1 मिलीमीटर इज 10 raised to the power minus 3 meter, and 1 micrometer is 10 raised to the power minus 6 meter।
अब क्या करना है, माइक्रोमीटर निकालना है। तो 1 मिलीमीटर 10⁻³ अब क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई 10⁻³ से डिवाइड, और ये हो गया आपके पास मीटर। नेक्स्ट थिंग, ये माइनस के ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मीटर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻6 यानी कि 1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ माइक्रोमीटर, बट हमसे पूछा क्या गया है 1 माइक्रोमीटर ना, तो इसको उल्टा लिख दीजिए, ये आ जाएगा -3 मिलीमीटर। सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन इज अप टू, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट को किसी दूसरी यूनिट की फॉर्म में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट की बात करते हैं अब, some practical units. See, there are two pictures in that. The very first one is of bacteria, that is the microscopic picture of a bacteria, and the size of bacteria is in microscope में micrometer बोलता हूँ, जिसका भी हमने क्वेश्चन किया है। Second one is of molecules and it is of the order of nanometer. Nanometer means 10⁻⁻⁹. So these are microscopic size. These are basically microscopic measurements. We cannot predict them with our naked eye. These are microscopic measurement. ये microscopic measurement है, इनको हम naked eye से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, उससे भी छोटे देखिए, एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10, जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10, जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। फर्मी, ये न्यूक्लियस का साइज होता है, सारी चीजें एटम से मिलके बनी है। अगर मैं आपको सिंपल करता हूं तो समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द स्मॉलेस्ट वन इज स्पार्क, then electron, proton and neutron, then nucleus, then atom, then molecules, cell, and then we got pod. So this is the more simple classification of the structure. So smallest one is quark, although हमें quark का size नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यू का साइज भी अभी कुछ डिस्कस नहीं है। हाँ, न्यूक्लियस का साइज हमें पता है, वो हम अभी देख चुके हैं, 10⁻⁻50, 10⁻⁻15। तो these are the part of unit. नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉम। अब थोड़ी बड़ी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने माइक्रोस्कोपिक यूनिट की बात की थी, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द मैक्रोस्कोपिक। दीज आर मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट, ये मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट है। लाइक the astronomical unit, AU, the distance defined as mean distance between Earth and Sun. Value है 1.5. 1.5 is not the exact value. Exact value is I should write it here. 1.496 10⁻⁵ मीटर. This is. और अगर आप इस डिस्टेंस को डिवाइड करते हो स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो आई एम श्योर यू विल द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस। तो यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास क्या, 1.5 10⁻11। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸. Speed is 3 × 10⁸. इससे आप कैलकुलेट करोगे, so you will get something like 8 minutes. So the sun rays will take 8 minutes to reach the surface of Earth from the sun itself. Yes, from the sun itself. Next one is light year.
सबसे important बात, and I have seen it so many times. It has been asked in the exam, like light year, light year, light year is the unit of, light year is the unit of distance. ये बात आप याद रखेंगे, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. मैनी टाइम्स स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज्ड और वो सोचते हैं कि जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस की यूनिट ना होकर के इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है. इसकी वैल्यू है 9.5 into 10 raised to the power 15 मीटर. नेक्स्ट पार्सेक. पार्सेक देखिए जी, whenever we need to find out the distance between the two bodies and there is something like we need to remove the let's say that हमें जो है parallax remove करना पड़ता है. there is a method called parallax method. parallax method मैथमेटिक्स में भी हमारे पास एक कंसेप्ट होता है like this. This is angle, this is arc and radius. Radius. So this is this. So generally relation was angle is equals to arc upon radius. Angle is equals to arc upon radius. At one end there is earth. At one end this is earth and this is sun. So it is defined as the distance at which an arc of one astronomical unit subtend an angle of 1 degree. 1 degree का एंगल है और 1 astronomical unit, मतलब कि आर्क की वैल्यू होनी चाहिए 1 AU. It should be 1 AU and of course radius हम कैलकुलेट करेंगे. So angle is 1 degree is equals to 1 AU upon 1 radius. यहाँ से आप रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 1 डिग्री चेंज करना पड़ेगा and this is 1.5 10 raised to the power 11. इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. So you will get 1 parsec as 3.16 10 raised to the power 16. That is the 1 parsec. These are some practical unit, macroscopic unit. Some practical unit, microscopic unit. Next one is acre. Now, although these are the unit of length, but not length completely. These are the units, some derived units. Derived in the sense like unit for area, volume, or like this. If I take about acre, we generally measure the area in acre. Like I used to have 5 acre of my area in particular city or particular village, or I have a plot of that much. So 1 acre means 4046.8 meters square. Second, hectare. See, although all are the unit of area, but the difference is, let's see the difference. It is in Britain. It is in France, and that is one is nuclear area. These are nuclear cross section used by the scientists whenever they perform some nuclear experiment. So these are the units of area. Let's move to the next one. 1 metric ton, that is 1000 kg. Yes, this is also the unit of mass. These are the unit of mass. 1 metric ton 1000 kg, 1 quintal 100 kg. Next one is 1 pound 0.454 kg, 1 slug 14.59 kg, approximately 14.5 kg. 1 Chandrasekhar, that is 1.4 the mass of sun. Mass of sun is 2 into 10 raised to the power 30. When you multiply 1.4, it will become 2.785. It is the biggest practical unit. Point to be noted, point to it remembered. Biggest
practical unit for measuring mass. What it is? CL. It's CL, Chandrasekhar limit. Next one is, okay, some practical units, smaller one, like atomic mass, 1/12 mass of single carbon atom. We generally measure the mass of atoms or mass of nucleons, nucleus in nuclear physics in terms of this atomic mass unit. There's 1.6 into 10⁻⁻27 kg. That is the mass of a proton, mass of hydrogen nucleus. Then smallest practical unit of for measuring mass, and it is used to measure mass of single atom, proton and neutron. That I have already told. Next, one solar day, 24 hours. One sidereal day, 23 hours and 56 minutes. One solar year, 365 solar days. One lunar month, 7.3 solar days. One shape, 10 raised to the power minus 8 seconds. These are some of the units of time. Let's move to the dimension. Dimension are basically what? So let me tell you that what are dimension. See, important one. It is basically, I am telling you the dimension. The power to which the fundamental quantities, the power to which the fundamental quantities are raised in order to express derived quantity. In order to express derived quantity, इसी derived quantity होगा कि express करने के लिए fundamental quantities की कितनी power करनी पड़ेगी. That is what dimension is all about. वो होती है वही हमारे पास dimension. So there are, although there are 7, like luminous intensity, J amount of substance, and current, A, temperature, this, but you should remember only these 5. These 5 are important. These 5 are important. Length L, mass M, time T. Temperature, in some of the books you can use K, but some books also use theta. Current. So these are the dimensions. These are the dimension. Next thing is, let's see the dimension of some of the quantities. Yes, the power of fundamental quantity and a derived quantity are called dimension of it. For example, I'll show you an example, a simple one. See, what is speed? Speed एक derived quantity. अगर हम speed की बात करें तो speed is distance upon time. Mass का इसमें कोई जिक्र नहीं है, 0. लेंथ है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ L, टाइम है लेकिन डिनोमिनेटर में तो -1. ये डायमेंशनल फॉर्मूला है. इसके डायमेंशन की बात करूं तो 0, 1, -1. सॉरी, इसके अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 0, 1, -1. Yes, that is the dimension. 0, 1, -1. चलिए जी. Next thing is, see, there is an example. एक example है, and what's that? Density is upon volume. So like volume को कोई भी quantity है, remember one thing, simplify it in terms of fundamental quantity. Simplify it in terms of fundamental quantity. Fundamental quantity terms में इसको simplify करना है हमने. Yes.
फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में उसको सिंप्लीफाई करना है, देन वी विल बी एबल टू से दैट कि ओके दैट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हमने उसको मास लेंथ की फॉर्म में कर लिया, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, L into L into L, so this is the dimension formula. Once again, what is the dimension? 1 minus 3 and 0. These are the dimensions. See, they have also written it, the dimension of density 1 and minus 3. Dimension is 1 and minus 3. Next one is to check. Now there are applications. Yes, these are the applications. These are the applications of dimensional analysis. Application of dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। सबसे पहले हम चेक करते हैं करेक्टनेस। सबसे पहले हम चेक करते हैं करेक्टनेस किसी इक्वेशन की, सेकंड यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, थर्ड डिराइव करते हैं फॉर्मूला। तो तीन एप्लीकेशन चेक हैं, यूनिट को कन्वर्ट करते हैं और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। नेक्स्ट वन इज सी। अब चेक किस तरह करते हैं, किस तरह से हम चेक करते हैं। हमारे पास ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है, दिस इज न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप ध्यान से इसको समझें तो दैट इज न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जस्ट अ मिनट, सॉरी या दिस इज द न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज न्यूटन second equation of motion. This is Newton's second equation of motion. ये न्यूटन की second equation of motion. Yes. So what we gonna do? We're gonna check whether this equation is dimensionally correct or not. क्या ये equation dimensionally correct है या नहीं भी हमने वो check करना है। X is a length. X का जो dimension है वो L रहेगा सिर्फ। V speed, velocity is what? Length upon time, which is this velocity into time, यानी कि length upon time into time. So time से time cancel, हमारे पास length बचा। acceleration, length upon time का square, time square से time square cancel L। तो आप देख सकते हैं you are left with L is equals to L plus L। अब इसको 2L नहीं लिखना है, हम कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सेम तरह की क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है। दैट इज बेस्ड अपॉन अ प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्टेट दैट only those quantities are added or subtracted. Yes, only added or subtracted. There is nothing about product or like divide, which have same dimension, केवल वही क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जिनका डायमेंशन सेम होगा। जिनका डायमेंशन सेम नहीं होगा वो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही बेस है, इसी बेस पे हम चेक करते हैं सीधी उसकी यू कैन से इक्वेशन। चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट यूनिट SI to CGS, CGS MKS। देखो MKS और SI तो सेम ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। MKS and SI are the same measuring system. They have
दे आर हैविंग नथिंग डिफरेंट इन दैम, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इट्स ऑल अबाउट द थ्री, लेंथ, मास एंड टाइम। अगर मैं बात करता हूं लेट्स से SI, तो लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। अगर मैं बात करता हूं CGST, तो लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकंड। अगर मैं बात करता हूं MKS की, तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड। आप देख सकते हैं तीनों की यूनिट सेम है। आप देख सकते हैं तीनों की यूनिट, आई मीन तीनों, सॉरी, SI एंड MKS आर सेम। तो बच्चे सिंस वी आर हैविंग द ऑब्जेक्टिव पेपर, तो हमारे पास सब्जेक्टिव नहीं है, तो आप बजाय इसको ये सब करने के, वैसे ये भी आप समझ सकते हो, डायमेंशन बेस्ड है, आप डायरेक्ट याद रखिए मीटर टू सेंटीमीटर जाना है 100 से मल्टीप्लाई, किलोग्राम टू ग्राम जाना है 1000 से मल्टीप्लाई। बस ये चीज दो चीजें याद रखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। मुझे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1 किलो में 1000, 1 आवर में 3600 सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 15 मीटर पर सेकंड। ये आसान तरीका है, आप इसको ऐसे याद रखिए, आपको ज्यादा काम आएगा, ज्यादा आपकी मदद करेगा। इनको एस डायमेंशन से करने का फायदा तब है इफ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर सब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्ट मेथड से फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही होना चाहिए। अब ये जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें हम फॉर्मूला डराइव करना सीखते हैं। तो आज बस इतना ही करेंगे, अब आपसे जो है नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।